मुबारकबाद पेश करती हूँ स्पेशली लिबरल की तरफ से यासिर नकवी जो कि ओंटारियो के प्रीमियर के लिए लड़ रहे हैं और हम सब उनके साथ हैं। एज़ यू कैन सी मैं भी टीम यासिर नकवी के साथ हूँ और मेरे साथ आज इस वक्त एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जो कि इस वक्त मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा प्राउड होंगी यहाँ पे और ये है यासिर की मॉम कैसर नकवी हमारे साथ है। आइए इनसे पूछते हैं कि आज ये कैसा फील कर रही हैं। आप कैसा फील कर रही हैं कैसर? बहुत हम्बल, बहुत आई कैन क्राई राइट नाउ। या आई एम सो हैप्पी फॉर हिम एंड ही इज़ रियली डूइंग गुड एंड मेरी सारी दुआएं उसके साथ हैं, सारी हिम्मतें उसके साथ हैं। अल्लाह उसे और कामयाब करे माशाल्लाह से। मैं समझती हूँ एक माँ के लिए इस वक्त जो आपकी इस वक्त ओवरवेल्म्ड है, जो आप जिस इमोशन से, ऑब्वियसली वो एक माँ ही फील कर सकती है कि जब उसका बेटा इतनी उरूज पे चला जाए और माशाल्लाह इट्स अ हम्बलिंग एक्सपीरियंस और मैं समझ सकती हूँ आपकी फीलिंग और हम भी आपके साथ दुआ गो हैं। यासिर के साथ हमारी सारी बेस्ट विशेस हैं और बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह उनको बहुत ज़बरदस्त तरक्की लैंडस्लाइड के साथ तरक्की दे इंशाल्लाह। यू आर वेलकम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ इस वक्त शाह फरीदी साहब यहाँ मौजूद हैं, GTA के बहुत मशहूर रियल्टर ब्रोकर। इनकी बहुत मशहूर ब्रोकरेज है जो कि माशाल्लाह GTA में अपना नाम पैदा कर चुकी है। उसके साथ साथ कुछ बहुत बड़े इवेंट्स भी इन्होंने लास्ट ईयर करवाए हैं और इस वक्त ये यहाँ पे यासिर नकवी की सपोर्ट में कैपिटल बैंक्वेट हॉल में मौजूद हैं। तो फरीदी साहब कैसा लग रहा है आज यहाँ पे आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। मैं यासिर नकवी भाई को बहुत दिनों से जानता हूँ, तकरीबन 8-10 साल से मैं इनको जानता हूँ और यासिर भाई जो हैं कम्युनिटी के लीडर हैं, फिर लिबरल पार्टी के सदर रहे, फिर अटॉर्नी जनरल रहे, लिबरल मिनिस्टर एज ए लेबर मिनिस्टर रहे। तो मैं ये समझता हूँ और हमारी कम्युनिटी को चाहिए कि एक जान हो जाएं और कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलें, वोट दें यासिर भाई को और अपनी कम्युनिटी के अंदर ये लीडरशिप को कामयाब तरीके से पार्टिसिपेट करें और आगे इनको मौका दिया जाए कि ये हमारी कम्युनिटी के लिए काम कर सकें आगे। क्योंकि यासिर भाई के अंदर जो क्वालिटी है, लीडरशिप की क्वालिटी है, वो यकजा करने के अंदर है। वो टीम बिल्डर रह चुके हैं बहुत ज़्यादा, तो वो टीम बिल्डिंग के लिए बहुत एक्टिव हैं और उम्मीद ये है कि वो टीम बिल्डिंग कामयाबी के साथ कर सकेंगे और ये रेस जो है वो सक्सेसफुली विन कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। हम सबको बाहर निकलना चाहिए और स्पेशली वोट देना चाहिए ऑन द वोटिंग डे। थैंक यू सो मच। जो है वो वोटिंग के लिए निकलती नहीं है, जो रेशो है हमारा वो बहुत कम है। 10% जो वोटिंग पड़ती है वो हमारी कम्युनिटी की पड़ती है। हमें अपनी कम्युनिटी के लिए, साउथ एशियन कम्युनिटी के लिए कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दें और 26 जुलाई जो अक्टूबर है उसके अंदर यासिर भाई को विन कराएं। बहुत शुक्रिया फरीदी साहब, थैंक यू सो मच। जी, मेरे साथ इस वक्त यासिर नकवी के टीम के बहुत ही अहम कारकुन और बहुत ही एक्टिव टीम लीडर मौजूद हैं। एहसन ज़िया का कोई ऐसा नहीं है जो उनको ना जानता हो। माशाल्लाह इनका अपना IT का भी बहुत अच्छा इनका बिजनेस है और बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं कम्युनिटी में, स्पेशली पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी हैं। तो एहसन, आज के इस प्रोग्राम के बारे में जो कैपिटल बैंक्वेट हॉल में हो रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, ये माशाल्लाह यासिर आज अपनी कैंपेन लॉन्च रैली कर रहे हैं और अभी जिस तरह आप देख रहे हैं कि यासिर अभी यहाँ पहुँचे नहीं और किस तरह हॉल खचाखच भरा हुआ है, ये कम्युनिटी का एक मैसेज है कि वो यासिर के साथ सब खड़े हैं और इंशाल्लाह ताला यासिर को जितवाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा लीडरशिप रेस का प्रोसेस समझा दूँ। जो लोग मेंबर बनना चाहें, इसमें लिबरल मेंबर्स जो हैं वो वोट डाल सकते हैं। मेंबरशिप की कट ऑफ डेट 11 सितंबर है। 11 सितंबर से पहले जो लोग मेंबर बनेंगे वही वोट डाल सकते हैं। मेंबर कौन बन सकते हैं? कैनेडियन सिटीजन्स, परमानेंट रेजिडेंट्स, रेफ्यूजीज़ और टेम्परेरी रेजिडेंट्स। वो अपनी मेंबरशिप करवा के वोट डाल सकते हैं
और 25 और 26 नवंबर को वोटिंग होगी, वोटिंग डे। हर राइडिंग को 100 पॉइंट्स मिले हैं। जो सबसे ज़्यादा वोट लेंगे 1 मेंबर 1 वोट में, वो लीडर इलेक्ट होंगे। और आज की डेट में इस वक्त जितना बड़ा इवेंट यासिर ने किया कैंपेन लॉन्च का, अभी तक किसी दूसरे कैंडिडेट का इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं नज़र आया जो यासिर ने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह यासिर जो है वो लिबरल लीडरशिप रेस जीतेंगे और 2026 में डग फोर्ड को डिफीट करेंगे और लिबरल गवर्नमेंट लाएंगे। यासिर जिन इश्यूज़ के लिए फ़ाइट कर रहे हैं वो हेल्थ केयर है, अफोर्डेबल हाउसिंग है, और उसके अलावा जो इस वक्त GTA में क्राइम रेट बढ़ रहा है उसके लिए फ़ाइट करेंगे। तो इंशाल्लाह आप निकलें, यासिर के लिए मेंबर बने, वोट करें और यासिर को लीडर जी, बनाएं। मेरे साथ इस वक्त यासिर के वालिद साहब अनवर नकवी यहाँ मौजूद हैं और मैं समझ सकती हूँ कि आज इनके लिए कितना प्राउड मोमेंट होगा। अनवर साहब, आपके क्या तासुरात हैं आज के इस इवेंट कैंपेन के बारे में? भाई, इस दिन की तो तैयारी बहुत दिन से थी और यासिर की पूरी तरबियत जो है वो सियासत में हुई है, क्योंकि मैं सियासत में था जब यासिर पैदा हुए। अच्छा, माशाल्लाह। और मैंने वहाँ पाकिस्तान के लिए जमहूरियत के लिए बहुत जद्दोजहद की, जेलें भी काटी। यासिर ने वो वक्त भी देखा जब वो मुझसे जेल में मिलने के लिए आता था। तो उस दिन से यासिर जो है वो बहुत ही प्रो पीपल और प्रो डेमोक्रेटिक है। और आप यकीन रखें कि हम लोग जो सियासत में हैं उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि हम चाहते हैं कि आवाम की ज़िंदगी बेहतर से बेहतर की जाए। जो कुछ भी बेहतर से बेहतर किया सके वो होना चाहिए। वी आर वेरी प्रो पीपल्स मैन। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो अस्सलाम मच। वालेकुम। इस वक्त यासिर नकवी की कैंपेन में मेरे साथ डॉक्टर तलहा मौजूद हैं। माशाल्लाह से डॉक्टर तलहा इस कम्युनिटी के एक बहुत जानी पहचानी शख्सियत हैं। तो तलहा साहब, आज की कैंपेन के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत खुशी हो रही है कि एक ऐसे शख्स को देखकर जो कि हमारी कम्युनिटी से भी हैं और माशाल्लाह से एक मुसलमान भी हैं, और उन्होंने इनके जो काम हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि उनके काम ऐसे हैं जिसको आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे कम्युनिटी नहीं, सारी इवन कम्युनिटी के लिए हटके इतने काम किए हुए हैं कि ही मेक्स अ रियली गुड कैंडिडेट रिगार्डिंग दिस। तो मैं ये आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर यासिर नकवी साहब।
ये माइक पकड़ाओ तो To do this, we need a new leader, a strong leader, a leader who knows and understands the needs of Ontarians, someone who knows the importance of having a conversation with the people, riding by riding, someone who's ready to listen and hear their issues, someone who's ready to accept and take the ownership of the mistakes and learn from those, someone who's ready to make tough decisions. He should be a team leader, a team builder, someone who doesn't sit by and accept the status quo. That is our friend Yasir Naqvi. So when Yasir reached out to me when he was doing a potential leadership bid, I had a lot of tough questions for him. As a past candidate who just lost in the last election, and we did everything possible, the results should have been different. So my friends, let me tell you about my friend Yasir. He understands the steps we need to take to rebuild our province and to rebuild the Ontario Liberal Party. And we also bonded over the fact that we're both parents, and also the fact that we're both young immigrants. When we came to this country, Ontario provided us the opportunity that we needed to succeed, which has strained under Doug Ford's leadership. Yasir is the kind of person we need right now to transform our party and to defeat Doug Ford in 2026. Can we hear a loud round of applause? And no one knows more about leadership than our friend who was a former cabinet minister, John Wilkinson. Hi everybody. This microphone's working? All right, good. Listen, my name is John Wilkinson. I came over from Stratford. Yasir and I have been friends for 16 years. And we've served together in the McGuinty government. And I always remember the first time I met him. He'd just been elected in 2007. Bright young guy, full of life and energy, so happy, so proud that he was at Queen's Park. Given, as you know, his story and what it meant to his family, to be able to say no to the government and actually be free or be able to say to a fellow citizen with his seat office. And he had sought that office at Queen's Park, and he served in Parliament Hill. That's why his family, I, and so many other people are so proud of Yasir. So we worked together. He was my parliamentary assistant, and we had very difficult talks. And the Premier, McGuinty, asked me to get our efforts on the HST. So we were getting this is so important to have anyone who wants to be part to work with you. And every law firm in Ontario wanted him on their letterhead because he is a former Attorney General of the province of Ontario. No law firm would say no to Yasir. And what did he do? He became the CEO of the Institute for Canadian Citizenship. And that's the Liberal Party. That's what we do. That's what we did under David Peterson. That's what we did under Dalton McGuinty. That's what we continue to do under Kathleen Wynne. Because we represent the future. Yes, sir. Where is he? Come on.
because I'm getting all your support and your love, which means a lot to me. But it's special, really special today, because my Ammi and Daddy are here with me today. They have had a very big role in the person that I am today. And I want to share a little bit with you about that, because I think it will help you understand who I am as a person. The story I'm going to tell you, the story of many of us. The story of sacrifice. The story of looking after your family. Before we moved to Canada, my parents were part of pro-democracy movement. When I was 10 years old, my father was thrown into jail for leading a pro-democracy march. That was a tough time for our family. But it taught me one of the biggest lessons of my life, which is that you never accept the status quo, that you sacrifice to build a better life. Some years later, they decided to move to Canada. Now you have to understand, they both are lawyers. They lived good middle-class lives. But they knew the status quo for their children was not good enough. They wanted their children to get good education and have a better life. So they converted their rupees into dollars. We bought a motel and moved to Niagara Falls. I told you they were lawyers. They didn't know anything about running a motel. So we all worked together. My brother, my sister, and I, we pitched in before and after school. Like many immigrant families. At one point, we lost everything in a recession. The whole family of 5 of us moved into a small 2-bedroom apartment. I used to sleep in the living room. But you know what? We had the promise of Ontario. We knew that when Dad got sick, Ontario's health system was there to look after him. They knew that Ontario's public education will be there for their children so that we could be successful. That has been the beautiful thing about our incredible province. So many people ask me, they wonder, why am I doing this? What's motivating me? My friends, I did not get into politics to be comfortable. Challenging the status quo is in my DNA. Because what my parents taught me is that real leaders step up. They do the hard work and they do everything possible to build a better future. And that's what I want my children to learn from me. Wow. That Dad got up and he did something to make sure that Ontario and Canada is one of the best places in the world. Today, the promise of Ontario is slipping. Doug Ford has broken the promise. Yes. This cannot be the status quo. That is why we have to do the hard work to transform our party, the Ontario Liberal Party.
riding across this beautiful province. A party that is a mirror of Ontario where all of us can see ourselves reflected in it. That is the transformation that we have to work on. This is not a fight about left versus right. This is about all of us coming up with practical solutions that will make everyone's life easier to live. My friends, you know that I've been traveling our province. I've met a lot of you doing those travels. And everywhere I go, I'm hearing the stories of struggle. The struggle that people are feeling. You can sense their anxiety. How many of us know of families who are struggling to find a family doctor or nurse? Show me your hands. How many of people do we know? How many kids we know who are struggling in overcrowded classrooms? Young people who are working 2 or 3 jobs and still are struggling to pay for rent or groceries. That is not acceptable to me, and I know it's not good for you. That's why I want you to join me. My mission is to defeat the court in 2026 so that we can restore the promise of Ontario where we can all succeed, whether you were born in Windsor, Timmins, or Karachi. So my friend, the hard work starts now. Starts now. Let's do this together. We can do this together. I need you, and we have to work together to make this happen. Je m'appelle Yasir Naqvi. Je suis candidat au leadership du Parti libéral de l'Ontario. I'm Yasir Naqvi, and I'm seeking to lead the Ontario Liberal Let's do this for our parents and for our healthcare workers. Let's do this for our kids and their future.